All right. So, welcome to lecture number 16, and today we are going to uh, look into responsive and e-commerce. Okay. So, before we do that, just raise your hands or just give a thumbs up that who all have completed at least some screens of the UI. ओके, ठीक है, गुड प्रोग्रेस। सो जिन्होंने भी हाथ ऊपर किया था उन्होंने ग्रुप में भी ऐड किया था। And as I said, I'm still looking into the designs that you guys have shared. I'll share individual feedbacks. Okay. Second thing was this will probably be our last lecture for the live design. Okay. Post this, what we'll do is we will have a lecture on Saturday. Okay, where everyone will be part of the call, of course, and we will look into different sort of portfolios. We will look into uh, the resumes. We will look into the prep for the interviews, what all you should be prepared of for. So all of that will take care on the Saturday. Okay, it will be a very quick 1.5 hour call. Okay, lekin what we will do is then you know then there's no need for a group sort of lecture. Then individually I'll be guiding each and every one of you with your portfolio, with your project. Okay, so what you'll have to do is you'll have to send me the designs, the wireframes, everything that you guys have done. ठीक है एंड जो हम सैटरडे को कवर करेंगे पोर्टफोलियो, यू नीड टू प्रेजेंट योर पोर्टफोलियो इन दैट पर्टिकुलर वे। ठीक है, सो वो आपका कितना अच्छा है, कितना नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, ऑल ऑफ दैट आई गिव इट टू यू पर्सनली वन टू वन। ओके, सो नो नीड फॉर लाइक अ ग्रुप कॉल फॉर दैट। सो वो एक था। फोर्थ थिंग वाज everyone who is going for interview or they are creating their portfolios, do make sure talk to me once. Just say I think tomorrow Nishi is going for an interview, so she also you know had some queries. So that way, before going for the interview, just ping me once. Tell me as to what is the point, what is the issue, कौन सी company क्या है, so that I can guide you accordingly. Okay, and also for the portfolio, make sure that you keep working on your portfolio. Don't stop. Lectures खत्म हो जाएंगे इसका मतलब ये नहीं है कि हमको जॉब मिल जाएगी। Okay, so this is not a recruitment agency. We are learning UI UX. ठीक है, UI UX का प्रोसेस ऐसा ही है कि कोई एक कोर्स, कोई एक बैच करके you cannot learn UI UX. You will understand the fundamentals, but you will learn, but you won't directly get the job. The point is that. ठीक है, so make sure that every one of y'all need to send me your individual design, individual portfolio that I will review. ठीक है, जिसका जिसका मुझे portfolio नहीं आया है, you won't get your certificates, and I am not joking. I need every one of y'all to send me your portfolio. डिजाइन बनाया है तो डिजाइन भेज दो, that's fine. अगर आपने वो पोर्टफोलियो फॉर्मेट में नहीं बनाया है, इवन दैट इज फाइन। ठीक है, बट आई वांट एवरी वन ऑफ योर टू सेंड मी द डिजाइंस। वो डिजाइंस में जो इंप्रूवमेंट होगा मैं वन टू वन आपको कॉल पे ऐसे कोई जूम मीटिंग लेके या सॉरी गूगल मीट लेके इंडिविजुअली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर अगर मैं डिजाइन देख के अगर आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा तो आई डू दैट ऑल्सो। वट एवर इट इज, सेंड इट टू मी एंड आई गाइड यू वन बाय वन। एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, एनी कंसर्न्स, एनीवन? And don't worry, I'll give you the certificate. And I'll also keep posting the job openings जैसे मैं अब तक ऐड कर रहा था, right? अब तक मैंने जैसे job postings भेजी है, I'll keep on sending the job postings on also. There are a few जो मुझसे already touch में है for jobs, for interviews, you know. So I will keep guiding every one of you all. ऐसा नहीं कि सिर्फ जो एक दो है वही, every one of you all. ठीक है? And if someone is looking out for internship, do let me know that as well. We can work around.
for the internships too. तो आपको internship का भी अगर certificate चाहिए, we can work on that. ठीक है? Yes, so that's about it for the announcement. Now coming back to our session. Yes, so we'll start with the responsive first. So basically, what is responsive? What is responsive? जैसे हमने ये website बनाई थी, we did this website, right? I think we already covered responsive, did we? Sir, not in detail, sir. Okay, ठीक है. So what is responsive? So we create a desktop version, all right? We then see different grids. So now that we know grids, correct? What happens is in the desktop version, we have a certain grid, correct? 12 column ka grid. When we lower the resolution of the screen, the things need to align accordingly. Now, what does that mean? I'll give you some examples. So we'll take a standard example. Of pitch.com. Yeah. So if you see, they have changed their website, by the way. Now they have tabs here. Nice. So this is the desktop version, right? So let's first go through the details. See what is responsive. Now the resolution for my screen. Okay, so now here also let me change one particular setting of my screen. So right now I am at 125%. What's wrong? Terrible problem with my system. Oh no, actually I'm at 100% only. Fine. So yeah, the resolution for my screen right now is 1920 by 1080. All right. Let me bring this out. Okay. Yeah. So now what happens is, let me change the size and we'll pick up a laptop size. Let's put it here only. 1440 by 900. Okay. So now this is the laptop version. We'll make it 100%. Okay. Then 900, I think screen is getting cut. We'll keep it as 750. हमारा viewport. Okay, that. So this is my desktop website. So now if I compare this, let me share my entire tab instead. Yes. Yes. So if you see, this is the laptop version 1440 by 750. This is my desktop version 1920. So इसमें ज़्यादा difference है क्या? नहीं है. इसमें first fold का difference है. Wherein अगर height ज़्यादा है, so I can see this particular graphic out here. Correct. Whereas if you see this, I only see the tabs. Right. I only see the tabs in the laptop. So not major changes or difference here. Now where we will start seeing the changes is if I go to 1366, which is again a laptop version only. So if you see again the grid, it's the same. Okay. So इन्होंने ये जो grid use किया है, here also the grid is the same. If you see the space on the left and the right has reduced, that means the center grid is still the same. Now, but when I select 1366, correct? Yes. Then also my grid is the same. थोड़ा सा छोटा हुआ है grid, correct? थोड़ा सा, but nothing major. That's fine. The major impact would be when we see it on the iPad.
right? Let me do it 100% and landscape. Yes. So the resolution right now is 1024. So now if you see, correct, I have the hamburger menu. क्योंकि यहाँ पर we cannot have all the menu items what we have right now. The elements in the background have gone. Can you see? These elements, they are now no more visible, right? Then if I see this is still retained, this curve and this is still retained. All of these, the fonts and everything are, reduced. The font size of it is relative. No, I think it's the same. So no changes here as well, right? No changes here as well. So यहाँ सब same है. What they have only made the changes, the elements. Now coming here, let's compare. तो ये section भी इन्होंने same रखा है, खाली if you see the sizes, these are relatively smaller, of course, so होने ही वाला है. No rocket science. The images are getting smaller. लेकिन यहाँ पर एक change है, see, in this section, ये वाला. यहाँ पर if you notice, on the left I have the testimonial, on the right I have the features, correct? But here I have the features on the top and the testimonial at the bottom, because I cannot fit all of these with so much of text in the same layout. अगर मैं वो करता हूँ, so this becomes very small, है ना? This box becomes only this much, so the font size of this becomes very small. So that's why in responsive design you take such calls. कि ये दिखेगा, पढ़ने में आएगा, नहीं आएगा, and that is how you do the responsive design. Rest everything, if you see, is still the same. Only sizes come over. Clear? Now, another change that you will see is this in the portrait mode. यहाँ पर देखो font size वगैरह सब छोटा हो गया. Layout is still the same. यहाँ पर see major change again. यहाँ पर क्या था, left and right. यहाँ पर सब एक के नीचे एक आ गया. Image on the top, text at the bottom. Image on the top, text at the bottom. Right? This image goes on the top and text at the bottom. Clear? So in responsive, this is the major change. एक तो मेनू का होता है, नेविगेशन का. दूसरा होता है that things that are next to each other goes below, one below the other. Here goes one below the other. ये देखो. और यहाँ पर एक और अच्छा एग्जांपल है यहाँ पर. If you see, we have 4 tabs, and mobile में या laptop में there is no space, so they have created this horizontal scrolling tab. क्योंकि एक लाइन में सब आना मुश्किल है. एंड रिमेंबर आई टोल्ड यू के 12 पिक्सल से नीचे हम फॉन्ट साइज नहीं लेके जा सकते, बिकॉज इट्स नॉट रीडेबल, करेक्ट? सो कीपिंग ऑल ऑफ दैट इन माइंड, दे हैव द स्क्रोलिंग टैब्स. ओके, ये भी एक अच्छा एग्जांपल. यहाँ पे क्या था, यहाँ पे द इमेज वाज ऑन द टॉप एंड दिस वाज एट द बॉटम, करेक्ट? यहाँ पे व्हाट दे हैव डन इज, since if you notice, this will become too big, है ना? और ये अगर हम इमेज का रेशियो देखें, इट्स अ हॉरिजॉन्टल इमेज, रेक्टेंगल हॉरिजॉन्टल इमेज, राइट? अगर मैं इसको ऐसा बड़ा कर दूंगा एक के नीचे एक, तो इमेजिन करो एक इमेज इतनी बड़ी हो जाएगी, है ना? सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि ये मेरा जो इतना सेक्शन है, इफ आई टेक दिस, let me share my entire screen once. Yes. So if I took a screenshot, and now let me add a iPad mini tablet. Yeah. Okay. Now if I add that particular thing here, correct? So imagine कि ये section कितना बड़ा हो जाएगा, एक ही. Getting my point? ये एक ही कितना बड़ा हो जाएगा, करेक्ट? सबको समझ में आ रहा है? ये देखो,
ये एक ही कितना बड़ा हो जाएगा. सो अगर मैं इसको रिव्यू करता हूँ, इसी दिस एक कितना बड़ा हो गया, है ना? क्लियर है? Whereas now if I see the implementation that they have done, this वो जितना एक में आना वाला था उतना तीनों में आ गया. So they have kept the image the same, बस उसका अलाइनमेंट चेंज कर दिया. Instead of top, they took it on the right side. तो ये यहाँ पर सेट हो गया. Is it clear? यहाँ पर भी if you see this was horizontal, यहाँ उन्होंने एक के नीचे एक ले लिया. Guys, any doubt? All clear? चलो. Yes, Rohan. सर वो अगर एक के नीचे एक भी आ रहा है तो वो एटलीस्ट रीडेबल तो बन ही रहा है. तो देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गेटिंग ऑल दोस थ्री टुगेदर इफ लाइक वैसे रहता है तो मतलब वो लेआउट भी प्रॉपर ही है एक No, no, तरीके no. से ना. That layout is not proper. Wait, that layout is not proper. ठीक है, let me explain it to you in another way. That बिकॉज रीडेबिलिटी में भी फोकस हो ही जाएगा ना एट द एंड ऑफ द डे. becomes too big. I will give you the direct comparison. क्योंकि हम iPad में रिव्यू करेंगे ना तो प्रॉपर आएगा. राइट. सो अभी ये भी है तो पूरा रीडेबल, क्योंकि इस पे फॉन्ट साइज पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है. बट यू ऑल्सो हैव टू थिंक कि यूजर कितना स्क्रॉल करेगा और कितना वियर्ड लगेगा कि अगर मुझे एक स्क्रीन में सिर्फ एक ही चीज दिख रहा है. इमेजिन दिस, ये तीन, दिस थ्री आर इक्वल टू ओनली वन. ये देखो, ये मेरे को एक कितना बड़ा बड़ा लग रहा है सब, राइट? मेरे आईपैड में it is so big. Whereas if I see this looks pretty. First thing, मुझे यहाँ कोई साइज चेंज नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं इसको elongate करता हूँ, बड़ा करता हूँ, so technically also I'll have to re-upload this particular thumbnail of a bigger size. ठीक है, वो भी मुझे नहीं करना पड़ेगा. यहाँ पर फॉन्ट साइज इतना बड़ा है, अगर मैं इसको छोटा भी करता हूँ तो भी वो हायरार्की मिस हो जाएगी कि इमेज इतनी बड़ी है और फॉन्ट इतना छोटा है. करेक्ट. So what they have done is they have kept the size the same. यहाँ पर जो साइज है ना, ये वाला साइज, they have kept that size the same. बस उसका अलाइनमेंट इसको राइट में कर दिया. So that is how they smartly achieved the readability issue also and also the responsive. क्यों मुझे एक ही फोल्ड में तीनों न्यूज आइटम दिख रहे हैं, वरना यहाँ पर क्या हो रहा है, एक इसमें इतना बड़ा दिख रहा है. राइट? समझ में आ रहा है? So it is not yes sir. it is not always about कि readable हो. You have to think it from multiple aspects. कि एक तो ज्यादा स्क्रॉल भी ना पड़े और ज्यादा बड़ा बड़ा भी नहीं दिखना चाहिए हमेशा स्क्रीन पे. So that's the reason. Yes, Pratap. Sir, is there any particular limit to how much we should let the user scroll? No, there's no limit. But if you take this example in particular, they have already a very long scroll. Correct? So ये Yes, है, that's right. करेक्ट, ये है. तो यहाँ पर इन्होंने इसको बड़ा क्यों रखा है? इसको भी सेम कर सकते थे. इनफैक्ट इसको नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये जो इमेज दिख रही है इसमें एनिमेशन, अगर मैं इसको साइड में डालता हूँ तो इट बिकम्स वेरी स्मॉल, तो मुझे एनिमेशन दिखेगा ही नहीं, है ना? अगर मैं इसको यहाँ साइड में Yes. डालूंगा तो एनिमेशन दिखेगा. एंड एट द सेम टाइम ये जो टेक्स्ट है ये भी काफी बड़ा है, तो ये मुझे फॉन्ट साइज बहुत छोटी करनी पड़ेगी. दैट्स व्हाई ये पर्टिकुलर लेआउट के लिए दिस इज फाइन, so that I can see in a very good view what the animation is. Correct? Whereas in this particular view, it is just an image, which even if I don't understand, that's fine. कि इन्होंने क्या किया है, 1 million teams in pitch, तो इन्होंने बस अलग अलग लोगोस बताए हैं. Introducing pitch.io, तो ये pitch का लोगो ही है सिर्फ. So there is no add-on value, it's just a design element. Correct? Customize embed. और ये एक्चुअली जब इसमें देखेंगे आईपैड में तो प्रॉपर दिखेगा. फिर भी ये तो अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं, इस पे शायद नहीं दिख रहा है. हाँ, सी दिस इज द एक्चुअल साइज. तो यहाँ पर एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है ना. तो एज सच कोई स्क्रॉल का लिमिट नहीं है, बट टू गिव यू वन इनसाइट, as per data users tend to scroll up to 6 to 7.
you know, user tend to scroll up to 7 6 times. folds, 6 to 7 folds. Okay. ठीक है? Any other doubts? No, all done. ठीक है. So now this was the concept of responsive. कुछ click हो गया I guess. हाँ. अभी इसका ही हम मोबाइल वर्जन भी देखते हैं before moving ahead. Let's see SE, right? So if you see similar जो मोबाइल में था, अरे लैपटॉप इसमें टैबलेट में था वही है, but things have become together now because जो स्पेस है वही है. तो यहाँ पर font sizes वगैरह सब ऐसे की कि वो रीडेबल हो फोन में. Same concept of horizontal scroll, right? Everything, the layout is the same जो टैबलेट में था, right? Same चीज. Font sizes, if you see यहाँ पर इन्होंने थोड़ा इस पे इम्प्रोवाइज कर दिया क्योंकि मोबाइल में रीडेबल होना चाहिए. अगर मैं छोटे रखूंगा तो आपको पढ़ने में नहीं आएगा. ये भी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल लिया, ये भी. And then I have this. So यहाँ पर if I see, again I go back to my original layout. Correct. Reason being, इसको अगर मैं साइड में करूंगा like the iPad, तो ये टेक्स्ट इतना छोटा हो जाएगा मुझे पढ़ने में नहीं आएगा, है ना? So this is what you have to take care when designing responsive. Is it clear? There's no thumb rule as such कि अगर आपने इसको डेस्कटॉप में लेफ्ट और राइट बनाया है तो इसको ऊपर नीचे ही करना है. It all depends on the design. It all depends on the design. इसलिए हमने जो UX किया वहां पर भी understand the hierarchy, the concept and everything. Clear? So we saw the iPad and mobile. Clear? जब हम बनाते भी हैं, बनाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही जानना है. सिर्फ बना तो लोगे, मुझे इतना विश्वास है. I know that you guys will be able to do it very nicely. जैसे we have this, correct? In the mobile we already did this, where we took this image at the bottom. Same concept. Same concept. Oh, sorry. We had these three. We took this. Right? Clear है? और डिजाइन में भी सेम ही कॉन्सेप्ट है. डिजाइन में सेम ही कॉन्सेप्ट है. Yes, that's correct. It's rearranging the elements and not only rearranging, it is also aligning the sizes to appropriate devices. ठीक है. अब जब आप डिजाइन बनाओगे, जब डेवलपर इसको कोड करेगा ना, there are few resolutions जो उतने पे ही करेगा, हर रेजोल्यूशन पे नहीं करेगा. So what are those resolutions? So एक है 1600 and above. ठीक है. एक होता है वही, मतलब 1600 and above, एक 1600 हो गया. उसके बाद आता है 1440. ठीक है. Specifically, I usually suggest to do it for 1366 also, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो 1440 में ठीक लगती है 1366 में बहुत बड़ी लगती है. ठीक है. So 1366. उसके बाद directly you can move on to 1024. There are many who also do it for 1280, but it's okay if you do it for 1024. क्योंकि अगर आप 1366 कर रहे हो तो 1280 में usually cover हो जाता है. Then comes 960. ठीक है. So these are all the widths, by the way. सिर्फ width, height हम नहीं देखते. These are only widths. So we start from 1600, 1440, 1366 optional, 1280, 1024, 960, 768, 640, 480 and 375. ठीक है. So I'll also post this on the group, don't worry. But एक बार मैं यहाँ पर chat में भी लिख देता हूँ. Which is 1600. Then we have 1440, 1366, 1280, 1024. आपको इतना बनाना नहीं है, बाय द वे आपको इतनी साइजेस नहीं बनानी है. ये मैं आपको सिर्फ ब्रेक पॉइंट्स बता रहा हूँ, उसका कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ. Last is 360 but rare. So these are all the break points. ठीक है. जो मेजॉरिटी ऑफ द डिवाइसेस है ना,
वो ये ब्रेक पॉइंट्स का ही है. सो यहाँ से लेके यहाँ तक it is desktop and laptop. ठीक है. 1366 is also laptop by the way. 1280 बहुत रेयर मिलेगा आपको, बट मिलेगा, बहुत रेयर. 1280. So this is for the laptop. यहाँ से it starts यहाँ तक for the iPad, and then from 640 onwards to 360 it is mobile. When we have to design, we only have to do it for 3, not for all. एक जो हम 1440 बना रहे हैं वो, ठीक है. You then have to do it for 1024, or it's okay even if you do it for 768, it's going to be the same. ठीक है. In case अगर client पूछता है कि ये resolution वाला चाहिए तो, वरना if you have to deliver the designs to the developer or the client, what you do is you give 1440 mandatory, you give 375 mandatory. इसके जो बीच के जो सारे resolutions है, all of these are then taken care by the developers easily. ठीक है. So when someone tells you I need responsive design also, make sure you do it. Of course, desktop 1440 तो करोगे, you will do it for sure. If someone asks you कि we also need responsive, then you only, so you again ask them a question, do you need it for iPad? If the developer says yes, then you do it for iPad. Else you directly do it for mobile, which is 375. Clear? जो हम मोबाइल ऐप के लिए लेते हैं ना, वही रेजोल्यूशन 375 एंड डेस्कटॉप 1440. उसके बीच का जो भी है वो डेवलपर हैंडल कर लेता है. क्लियर गाइस? एनी डाउट्स? Just give me a second, please. So sorry guys, I have to take that urgent call. So any doubts for the responsive design or the resolutions? Anyone? Any random doubt? कुछ भी हो? No? All clear? चलो, best. ठीक है. Super. So that's about the responsive design. Now looking at the e-commerce. Okay, now looking at the e-commerce. There are a few. Yes, Raj. So there's something called dynamic responsive also, right? That when we drag the entire screen size That's to, that's for the development. That the okay, developer okay, have to take care. As far as the design delivery is concerned, we only have to send these two resolutions. all right, sir, okay. Yeah. So this is what is dynamically responsive. Let me tell you. This. See. Okay. Now let's move ahead to e-commerce. Let's open up. By the way, there are few before we move to how e-commerce works. या उसमें हमको क्या ध्यान रखना है? What are the concepts? Navigation we have already seen, right? Navigation हमने already देखा ही था e-commerce का, which was this. So we are aware कि e-commerce navigation में क्या होता है. There is a prominent search, categories, wish list, cart, login, sign up, my account. Once I have logged in, then this particular thing changes to my account, right?
This becomes my account. ठीक है ठीक है अब now let's see an example. First thing before we move to again the example, there are different frameworks ready in the market for the developers, okay, which they use to code. Okay, the very first one that big platforms use is Magento. It is Magento. If the developer is using Magento, you have the liberty of fooling around with the layouts and structure. Okay, you can do it. मान लो अभी ये अगर Magento पे है तो आप इसको खुद भी कर सकते हैं. But there is a second framework which is called as a Shopify. Right now, Shopify has limitation. What is the limitation? I'll give an example. I think this is on Shopify. I think so. Let's see. No, this is not Shopify. No, this is not Shopify. What was the other website? Yes, this is Shopify. Now, when it comes to Shopify, you can have a custom homepage. Okay? You can design your own custom homepage. By the way, this particular website is done at my agency. I did their UX. And one of my colleague whose lecture we just saw, right? The guest lecture Pratik, he did the UI for this. Okay. Now, if I go to a particular thing, this page that I see, this is from Shopify. So I have, all of these liberty where I can see this way, 2, 3, 5, 6, whatever. Okay. I have this liberty. I have the items per page, sort by, etc. All of this is there. When I scroll, I can either have show more, right? Or if on scroll, I can also keep on scrolling more and more. So this is called as lazy loading, by the way. Whenever we see this, this is called as lazy loading. On the other side, if I see this, where you see the page numbers, this is called as the pagination. Okay, these terms we all should know. So when it comes to blog, when it comes to uh, e-commerce, you either use the pagination where you see the numbers, or else you also use lazy loading, which is load more option. Okay. Now this layout is standard for Shopify. Even if I go inside on a detail page, this layout is also standard for Shopify. Okay, you cannot do much about their layouts in Shopify. What you can do is you can change the theme. आप इसका फॉन्ट बदल सकते हो, कलर बदल सकते हो, पर ये जो यहाँ दिख रहा है ये यही दिखेगा. आप ये सब चेंज ही नहीं कर सकते. ठीक है, ये सब जो दिख रहा है आपको, you cannot change it. All of these, this will remain the same. So Shopify has its limitation when it comes to layouts. So whenever designing for e-commerce, make sure that you first know what is the platform that the website is going to be built. I'll give you another example.
I forgot the domain. Or was it Ratan Creation? Sorry, it was Ratan Creation. Ah, yes, Rohan. So Wix will also be considered as a platform like Shopify. Wix is for the basic website. It does have the option for e-commerce, but yeah, you can consider. But you don't have any liberty. You don't really design for Wix. Wix has their own designs and everything. Let me see if they have this one, the creation. Correct. Okay. So even this was done by us only. Now this is a complete custom platform. Custom platform. I mean, there's no fixed what we say framework. Okay. So then here we had the full liberty of doing whatever we want to. Correct. Here we had the full liberty. We can do whatever we want. So that's why we first need to finalize or ask what is the platform that we are planning to work on. Based on that, you have to design. So if it is Shopify, use any of the Shopify theme and use their same layout. If it is custom, then you have the ability and the scope to do all of this stuff. Now that was about the framework. There's one more framework called as WooCommerce. So there are websites built on WordPress. So it's a plugin for WordPress where you can have the e-commerce functionality. It is WooCommerce. Even WooCommerce has limitation of the layouts. So if you the client says that my website is going to be on WooCommerce, use any WooCommerce themes layout. Okay, you don't need to think or work on the UX for the pages. So now what are those pages? First, in e-commerce, there are some fixed pages, right? So what are those pages? Let's list them out. These are standard pages that all of the e-commerce framework also have. Home page. Okay, let me increase the font size. Okay. Sorry, yes, we have this. We have the category listing page. Now, in this page, you only have all the categories. When you click on a particular category, either from the home page, from the navigation, or from the category listing page, you get to the product listing page, where you see all the products. Product listing. Okay. When you click on a particular product, you go to a product detail page. Okay. When you search something, you have a search result page. These are very standard things that you will find in e-commerce. Then you have login, you have sign up, clear. You have my account. Under my account, you have certain things. Oops, sorry. Under my account,
You have few things. What are those? So profile, my orders, okay, settings, or maybe not settings, but addresses, where you save all your addresses, right? If at all someone save cards, then you have cards. So it is profile, my orders, cards. You have the option for logout. That's it. इतना ही है ई कॉमर्स में. Under my orders, you have one more thing, that is order detail page. ठीक है, अब ऑर्डर डिटेल पेज में क्या क्या आ सकता है, तो उसके जितने भी ये है जैसे ऑर्डर शिप, तो उसके सिर्फ टैग बदलते हैं, राइट. देयर इज नो सेपरेट पेज फॉर इट. ऑर्डर डिटेल पेज के अंदर उसके टैग बदलेगा. स्टेटस, ऑर्डर शिप, ऑर्डर डिलीवर्ड, इन ट्रांजिट, रिटर्न ऑर्डर. ठीक है, ऑर्डर डिटेल में एक रिटर्न का पेज जरूर हो सकता है, सो वी हैव द रिटर्न. दैट्स इट. कोई भी प्लेटफॉर्म हो उसमें ये स्टैंडर्ड पेजेस होने ही होने हैं, इसके बाहर कुछ पेज नहीं होगा. ठीक है, इसके बाद इसके अंदर डिटेलिंग्स होगी, जैसे प्रोडक्ट लिस्टिंग में आई हैव द फिल्टर, प्रोडक्ट डिटेल में आई हैव डिफरेंट the options जैसे कलर, साइज, एटसेट्रा, all of that. Search result page में भी again you will have filter. That's it. This is all about e-commerce. अब इसको बनाने में again कोई rocket science नहीं है, हमने जो बनाया है वही है. It's just that you need to know these things first. कौन से pages बनाने हैं. Rest you already know. This page that we are looking at, this is the listing page, product listing page. We are looking at the list of the products. इसी जगह अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ रिंग या हार्ट रिंग example, I'll still get the same page. See, I still have the same page. उसको कोई result नहीं है बस. Then if I go to wish list, तो ये login sign up आ गया मेरा, right? I have the wish list. cart है, तो अगर मैं कोई चीज cart में ऐड करता हूँ, मान लो, let's see how does it look like. Add to cart. तो ये गलत एक्सपीरियंस है इसका. Yeah, I think they have changed something or I don't know what. But जैसे ही आप अगर कार्ट में ऐड करते हो कोई भी चीज, let's go here. So you directly go to the cart, right? You see the cart function. So cart है अपने पास, मैंने जो यहाँ मिस कर दिया. अब ये होने के बाद I'll have cart, I'll have a review page, I'll have a payment page, I'll have a address screen. Sorry, ये सब तो मैं भूल ही गया था. I'll have address screen. I'll again have a review page here, actually, not here. And payment page after the address. So again, this flow is very standard, right? But इतने pages होंगे मेरे पास. Clear? So far, any doubts? Anyone? No? Card added. Sorry, भूल गया था. ठीक है. So these are all the pages. So now coming back to this. So I then see, the cart. मैंने कार्ट देख लिया. I added the items. फिर मैं इसको व्यू कार्ट करूंगा, तो कार्ट का डिटेल पेज भी होता है, which is nothing but my cart only, right? Then I see proceed to checkout. तो मुझे लॉगिन साइन अप पे लेके जाएगा वो अगेन. यहाँ पर मैं लॉगिन साइन अप करूंगा. एक्चुअली दिस इज शॉपिफाई. यस, एज आई सेड दिस इज शॉपिफाई. तो हाँ, मैंने ये एग्जांपल लिया. सो दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड स्क्रीन ऑफ शॉपिफाई व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ. ठीक है. सो ये सब भी आपको डिजाइन नहीं कर सकते हो, इस पे आपका कुछ है ही नहीं कंट्रोल. तो आप ये सब डिटेल डालोगे, यू विल पे नाउ, यू विल गो टू द पेमेंट गेटवे एंड देन यू विल कम बैक टू. यहाँ पर अगर ऐड करना है, सो वी कैन से सक्सेस एंड फेलियर. सक्सेस एंड फेलियर पेज होता है. ठीक है. सो ये हमारा ई कॉमर्स हो. ई कॉमर्स. अब इसके बनाना है, पेजेस बनाना. आई एम श्योर कि आपको सबको इसका लेआउट पता है, सारी फंक्शनलिटीज पता है. एनीवन हु हैज एनी डाउट्स with regards to functionality, with regards to how to do a particular thing in e-commerce, किसी को भी anyone,
Please tell me. Anyone? नहीं? चलो ठीक है. So let's move on. Any specific? So इसमें प्रिंसिपल एज सच सिर्फ एक इसमें ही आएगा आपका. आ गया ये. हाँ ये गोल ग्रेडियंट इफेक्ट. दैट्स इट. यू शुड नो कि आप कौन से स्टेप पे हो व्हाइल चेकिंग आउट. बस इतना जानना जरूरी है यूजर के लिए. और कोई ज्यादा आप कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगा सकते हो ई कॉमर्स में. ई कॉमर्स में अगर आपने कुछ छेड़खानी की तो उसका रिवर्स इफेक्ट आ सकता है. बिकॉज पीपल आर अकस्टम टू यूजिंग दिस पर्टिकुलर फ्लो. राइट. वेरी स्टैंडर्ड. और कोई ऐसे डाउट्स किसी को? ठीक है. सो वी कवर्ड रिस्पॉन्सिव, वी कवर्ड ई कॉमर्स. आई एम श्योर आप सब ये बनाओगे. आई वुड सजेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू एटलीस्ट क्रिएट वन ई कॉमर्स का जर्नी. बेसिक्स है. कोई भी एक प्रोडक्ट उठा के एक सिंगल प्रोडक्ट का भी बनाओगे तो भी चलेगा. ठीक है. उसका एक लैंडिंग पेज बनाओ. उसको कार्ट में ऐड करने के बाद कार्ट कैसा दिखता है. उसके बाद उसका पेमेंट, अरे लॉगिन साइन अप पेमेंट जो भी मैंने लिखा है उस सबकी एक स्क्रीन बनाओ. Reason why I'm telling you this, when you put that in your portfolios, the interviewer knows that you know everything about all of these stuff. You know about responsive, you know about e-commerce, you know about mobile app. वो जानना जरूरी है. That is your portfolio. सिर्फ डिजाइन दिखाना is not the portfolio. The interview should know कि हाँ आपको knowledge है हर चीज. That gives you an edge. अगर शायद 15-20 दिन 1 महीना जाता है, टेक दैट टाइम. अभी अगर टाइम जाएगा ना इट इज फाइन. लेकिन अगर वो टाइम चला गया, आप डिले कर रहे हो पोर्टफोलियो में, तो मान लो कि फिर बहुत डिफिकल्ट है जॉब मिलना. बहुत डिफिकल्ट. स्पेंड सम टाइम. अभी आप जोन में हो प्रैक्टिस के बनाने के, हो जाएगा महीने भर में हो जाएगा. पूरा जून महीना सिर्फ कोई भी डेडिकेटली रोज बैठ के डिजाइन बनाएगा ना, हो जाएगा. एंड आई एम टेलिंग यू सारी स्क्रीन्स बनाने की भी जरूरत नहीं है. ओनली डू द क्रूशियल वंस. पोर्टफोलियो कोई पूरा नहीं देखता है. स्क्रीन्स देख के एक जजमेंट ले लेते हैं कि इसको अलाइनमेंट प्रॉपर है कि नहीं, इसको फॉन्ट का नॉलेज है कि नहीं, इसको स्पेसिंग का नॉलेज है कि नहीं, इसको ग्रेड पता है कि नहीं, कलर हायरार्की पता है कि नहीं, फॉन्ट हायरार्की पता है कि नहीं. ये सब देख के जजमेंट लेते हैं. आई एम टेलिंग वेरी अपफ्रंट. ये सब देख के मैं जजमेंट लेता हूँ और बाकी भी. तो दिस इज द की. कोई ये फ्लो वो नहीं देखेगा अनलेस यू आर गोइंग फॉर अ यूएक्स जॉब. एंड आई एम श्योर कि यहाँ से शायद ही है कोई जो यूएक्स के जॉब के लिए जा रहा है अपार्ट फ्रॉम अक्षय. अच्छा है नो कि वो यूएक्स यूआई ढूंढने के लिए जा रहे हैं. राइट. तो मेक श्योर यू डिजाइन ऑल ऑफ दीज. एक लैंडिंग पेज बनाओ. ई कॉमर्स के 3-4 स्क्रीन ही बनाओ, चलेगा. राइट. एंड ये जितना भी मैंने ई कॉमर्स का बताया ना, दैट ऑल्सो अप्लाइज टू मोबाइल ऐप. एग्जैक्टली द सेम. कोई चेंज नहीं है. सिर्फ हाँ थोड़ा लेआउट में चेंज होता है. जैसे उसमें नेविगेशन नीचे होता है, फिल्टर्स वगैरह नीचे हो जाता है. But Rohan, I think you are more inclined to the UI more than the UX. So you will get the job description saying UX UI. But if you look at their task closely, or if you look at their what we say, the work that you are supposed to do there is would be more of UI. Okay, it would be more to do with the UI, not with the UX. So they have the word UX UI, but technically these two things are very different entities altogether. In fact, UI is part of UX.
at a very broader level, right? So that is about the e-commerce and the responsive. Now, the only part that we are left with and we'll take care on the Saturday is I'll design at least couple of folds of the landing page. I want to explain you guys the concept of landing page that will do on Saturday because there is a difference in home page and there is a difference in landing page. Okay. So वो difference हम Saturday देखेंगे. I will present to you some of the portfolios जैसे हम बना सकते हैं. I'll tell you where to apply for the jobs, where to apply for the internships, okay, how to search for jobs on LinkedIn. All of that I'll share it with you guys. Okay. Any doubts, any queries, any concerns, कोई भी तरीके की. Sir, can you show that list of pages you wrote on Figma?